आज हम डिस्कस करेंगे रोटर डायनामिक्स पार्ट 18 जनरल मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग क्रिटिकल स्पीड्स फॉर सिंपली सपोर्टेड रोटर विद one side overhung. General methods for critical speeds for flexible rotor was written by Melvin Powell in 1945. So complete concept is based on this works. That means this methodology. What are the key features? Rotor is considered flexible. It provides first stage, it provides first critical, second critical, critical speed, and so on. And the accuracy is very high. And disk is considered as a point mass. That means moment of inertia of disk is neglected. Coming videos में हम देखेंगे कि जब हम डिस्क का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर करेंगे तो रोटेटिंग एंड नॉन रोटेटिंग केस में क्रिटिकल स्पीड कैसे चेंज होता है। शाफ्ट स्पैन को समझना जरूरी है। सिंपली सपोर्टेड में नंबर ऑफ शाफ्ट एक होता है जो कि बिटवीन द बेरिंग्स होता है। सिंपली सपोर्टेड विद वन साइड ओवरहंग में नंबर ऑफ स्पैन टू होता है। तो सिंपली सपोर्टेड में एक स्पैन हो गया, वन साइड ओवरहंग में दो हो गया, एक हो गया बिटवीन द बेरिंग्स, दूसरा हो गया ओवरहंग, तो दो स्पैन हो गए। एंड सिंपली सपोर्टेड विद बोथ साइड ओवरहंग में नंबर ऑफ स्पैन थ्री हो जाएंगे, एक इस साइड भी हो जाएगा। तो दो स्पैन दो ओवरहंग में हो गए और एक बिटवीन द बेरिंग्स, तो तीन हो जाएंगे स्पैन्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिंपली सपोर्टेड विथ वन साइड ओवरहंग, तो नंबर स्पैन हो जाएंगे टू। शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द शाफ्ट का जनरल फॉर्मूला है शियर फोर्स एट स्टेशन एन, वी एन इजकल टू वी एन माइनस वन प्लस एम एन माइनस वन इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई एन माइनस वन। Bending moment at station n is equal to mn is equal to mn minus 1 plus vn into ln. Slope at station n is theta n is equal to theta n minus 1 plus beta bracket start mn minus 1 upon 2 plus mn by 2 bracket close. Deflection at station n is equal to yn is equal to yn minus 1 plus theta n minus 1 into ln plus beta bracket start mn minus 1 upon 3 plus mn by 6 bracket close ln। तो ये जनरल इक्वेशन हो गए फॉर शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर द शाफ्ट एट डिफरेंट स्टेशंस। बाउंड्री कंडीशन एट स्टेशन, स्टार्टिंग स्टेशन फॉर द स्पैन वन, जैसे स्पैन वन हमने माना 0 से 10 के बीच के शाफ्ट को बिटवीन द बेरिंग्स के लिए, तो बाउंड्री कंडीशन दैट में अप्लाई इन द लेफ्ट हैंड is expressed as a general form k y0 is equal to minus v0 is equation 1, c theta 0 is equal to m0 is equation 2, where k and c are the stiffness constant which specify elastic resistance on the shaft by the supporting bearing. Simply supported end bearing में bearing is infinitely stiff against the displacement of the shaft but no resistance to tilting of the shaft, so k is infinite and c is 0. So y0 is 0 and m0 is 0 as per equation number 1 and 2. So span 1 में starting station is from the bearing, and so following assumption for the part 1. Shear force at station 0 is V0 is 1 Newton. Bending moment at station 0 m0 is 0 Newton meter. Slope at station 0 theta 0 is 0 constant. Deflection at station 0 y0 is 0 meter. Span 1 का starting station is from the bearing, so the following assumption for the part 2. Shear force at station 0 is V0 is 0 Newton. Bending moment at station 0 m0 is 0 Newton meter. m0 is 0 Newton meter, and slope at station 0 theta 0 is 1 constant. Deflection at station 0 y0 is 0 meter. तो पार्ट 1 पार्ट 2 का कैलकुलेशन में यूज होगा। तो दीज आर द इनिशियल कंडीशन फॉर स्पैन 1। Mode shape and bending moment, slope and deflection at last station for span 1. That means mode shape for the span 1 and bending moment, slope and deflection at station last station, that is station number 10 for the span 1.
Shear force, bending moment, slope, and deflection at any point in the span is a linear function of four assumed quantity at the left hand of the span, that is station number 0 or point 0. Slope for the so for deflection at point n in the span yn is equal to an b0 plus bn m0 plus cn theta 0 plus dn y0, where an, bn, cn, and dn are numerical constant. Deflection of the shaft yn is equal to yn part 1 into v0 plus yn part 2 theta 0, equation 3, where n is 10 for the span 1, y1 is 0 because this is a bearing, so y1 is 0. Then yn part 1 is equal to y10 part 1 हो गया and yn part 2 हो गया y10 part 2. So v0 is equal to minus y10 part 2 into theta 0 upon y10 part 1. Replacing v0 in equation number 3, general equation for shaft deflection, yn is equal to bracket start yn part 2 minus yn part 1 into y10 part 2 upon y10 part 1 bracket close theta 0. Assume theta 0 is 1. Mode shape yn is equal to bracket start yn part 2 minus yn part 1 into y10 part 2 upon y10 part 1 bracket close, equation number 4. तो ये equation हो गया mode shape of the shaft for span 1. Bending moment mn is equal to mn part 1 into v0 plus mn part 2 into theta 0, equation number 5. Replacing v0 in equation number 5, general equation for bending moment, mn is equal to bracket start mn part 2 minus mn part 1 into y10 part 2 upon y10 part 1 bracket close theta 0, as theta 0 is 1. So mn is equal to mn part 2 minus mn part 1 into y10 part 2 upon y10 part 1. Bending moment at station 10, m10 is equal to m10 part 2 minus m10 part 1 into y10 part 2 upon y10 part 1, equation number 6. Similarly, slope at station number 10, theta 10 is equal to theta 10 part 2 minus theta 10 part 1 into y10 part 2 upon y10 part 1, equation number 6. The bending moment at 10 station, that is the last station for span 1, and slope at station number 10. Boundary condition at common point of span 1 and 2 and starting point of span 2. तो स्टेशन नंबर 10 का देखना है कॉमन पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर स्पैन 2 देखना है. तो बाउंड्री कंडीशन फॉर स्टार्टिंग स्टेशन फॉर स्पैन 2 क्या होगा? k y10 is equal to minus v10, equation number 8. c theta 10 is equal to m10 is equal to equation number 9, where k and c are the stiffening constant which specify elastic resistance on the shaft by the supporting bearing. Simply supported case में bearing is infinitely stiff against the displacement of the shaft, but no resistance to tilting the shaft, so k is infinite and c is 0. So y10 is 0 and m10 is 0 as per equation number 8 and 9. Boundary condition at the common point for the span 1 and 2, due to the shaft continuity and common point station is 10. Theta 10 span 2 is equal to theta 10 span 1, equation number 10. Y10 span 2 is equal to y10 span 1, equation number 11. Due to the bearing reaction and common point station is 10. ky10 is equal to minus bracket start v10 span 2 minus v10 span 1 bracket close, equation number 12. C theta 10 is equal to m10 span 2 minus m10 span 1, equation number 13, where k and c are stiffness constant which specifies elastic resistance to the shaft by the supporting bearing. At bearings k is infinite and c is 0. Condition at common point of span 1 2 from equation 10 through 13. Theta 10 span 2 is equal to theta 10 span 1. Y10 span 2 is equal to y10 span 1, and m10 span 2 is equal to m10 span 1. So these are condition. Now span 2 starting station is from the bearing, and so the following assumption for the part 1.
Shear force at station 10, V10 is equal to 1 Newton. Bending moment at station 10, M10 is 0 Newton meter. Slope at station 10, theta 10 is 0 constant. Deflection at station 10, Y10 is 0 meter. Span 2, starting station is from the bearing, so the following assumption for the part 2. Shear force at station 10, V10 is 0. Bending moment at station 10, M10 of span 1 Newton meter. Slope at station 10, theta 10 is equal to theta 10 span 1 constant. Deflection at station 10, Y10 is equal to Y10 span 1, which is 0. So these are the initial condition for part 1 and part 2 for the span 2. Mode shape and bending moment at last station for span 2. So shear force at infinite small distance beyond the last station 20 के बाद एक स्टेशन हम मानते हैं जिसको 21 बोलते हैं. So V21 is equal to V21 part 1 into V10 plus V21 part 2 into theta 0 is equation 14, where station 21 is equal to infinite small distance beyond the station 20 at free end for the span 2. But V21 is equal to 0, and so V10 is equal to minus V21 part 2 into theta 0 upon V21 part 1. Deflection of the shaft Yn is equal to Y1 part 1 into V10 plus Y1 part 2 into theta 0 is equation number 15. Replacing V10 in equation number 15, general equation for shaft equation is Y1 is equal to bracket start y1 part 2 minus y1 part 1 into v21 part 2 upon v21 part 1 bracket close theta 0. Assume theta 0 is 1. So mode shape for the span 2, y1 is equal to bracket start y1 part 2 minus y1 part 1 into v21 part 2 upon v21 part 1 bracket close. ये equation number 16. Bending moment mn is equal to mn part 1 into V10 plus Mn part 2 into theta 0 is equation number 17. Replacing V10 in equation number 17, general equation for bending moment, M, Mn is equal to bracket start Mn part 2 minus Mn part 1 into V21 part 2 upon V21 part, sorry, फिर से Mn is equal to Mn part 2 minus Mn part 1 into V21 part 2 upon V21 part 1 bracket close theta 0. Assume theta is 0 1, so mn is equal to mn bracket start mn part 2 minus mn part 1 into v21 part 2 upon v21 part 1 bracket close. So bending moment at station 20, m20 is equal to m20 part 2 minus m20 part 1 into v21 part 2 upon v21 part 1. So when the m20 becomes 0, that corresponding speed of rotation is considered as a critical speed. अब इसको एग्जांपल से समझते हैं. रोटर is simply supported at both ends of bearing. There is a load of 500 kg at the mid span. At the midpoint between two bearings, density and elasticity of shaft is 7.85 10 to the 5 kg per meter cube and 2.1 into 10 to the 11 Pascal respectively. Shaft diameter is 0.165 meter and shaft length between the bearings is 1.8 meter and total shaft length is 3.6 meter. That means यहाँ से यहाँ भी 1.8 मीटर है. कैलकुलेट द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्रिटिकल स्पीड. तो ये तो शाफ्ट का अरेंजमेंट दिया है, उसको हमने 0 से 10 को हमने 1 बिटवीन द बेयरिंग्स में डाला है एंड 10 से 20 को फ्री एंड में कर दिया है. एंड शाफ्ट का जो वेट था, मास था, उसको हमने स्टेशन में डिवाइड कर दिया. तो सॉल्यूशन क्या है? एक्चुअल रोटर नीड्स टू बी ट्रांसफर इनटू आइडियलाइज्ड इक्विवेलेंट सिस्टम consisting series of discs connected with elastic but massless shaft. Mass of disk is chosen so as to approximate the mass of the actual rotor. Mass moment of inertia of disk is treated as negligible so that disk mass is treated as a point mass. अगर मैं इसमें पूरा कैलकुलेशन ऐसा ही है, यहाँ से यहाँ स्पैन 1 है,
इसमें देखिए बेरिंग 0 से लेकर के 10, 0 स्टेशन से 10 स्टेशन के स्पैन 1 है, एंड 10 से लेके 20 के स्पैन 2 है। 21 एक इनफाइनाइट स्मॉल डिस्टेंस पे 20 से थोड़ा सा ज़्यादा दूर पे है, उसको स्टेशन 21 किया है। इसके करस्पॉन्डिंग ये भी इधर है, पार्ट 1 का, और पार्ट 2 का भी ये है। पार्ट 1 में स्पैन 1 का जो हमने एजम्पशन माना V0 0 1, बाकी M0 0, थीटा 0 0, Y0 0। पार्ट 2 में V0 0, M0 0, थीटा इज 1, थीटा 0 1 एंड Y0 0। इससे कैलकुलेशन करके यहाँ लाया। और बाउंड्री कंडीशन फिर 2 के लिए हमने क्या कर दिया, V01, M00, सॉरी V, एक्चुअली नॉट 0, वी कैन से V10। तो V10 1, M10 0, theta 10 0, Y10 0। Here V10 for second part में 0, बट M10 जो होगा यहाँ जो कैलकुलेट करके आया है वो है, और थीटा 0 जो कैलकुलेट किया है वो यहाँ है, और Y जो 10 है तो 0 ही है। फिर with that initial condition again you have to calculate, एंड फाइनल जो कैलकुलेट किया है हमने बेंडिंग मोमेंट एट 20 स्टेशन, वो यहाँ है, उसी को हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। तो अगर 143.947 डालते हैं तो बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाता है, एंड करस्पॉन्डिंग जो स्पीड आता है, क्रिटिकल स्पीड आता है 1375 आरपीएम। तो फर्स्ट क्रिटिकल स्पीड हो गया 1375 आरपीएम। इसका मोड शेप देख लीजिए। फर्स्ट क्रिटिकल का मोड शेप ऐसा है। मोड शेप के लिए फर्स्ट स्पैन में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, y1 is equal to yn part 2 minus y1 part 1 into y10 part 2 upon y10 part 1। ये फर्स्ट स्पैन के लिए है। फिर क्या करना है, दूसरा यूज करना है y1 part 2 minus y1 part 1 into v21 part 2 upon v21 part 1। ये यूज करना है फॉर स्पैन 2 के लिए। और इस तरह से हमने इसका मोड शेप निकाला। मोड शेप में याद रखिए ये जस्ट प्रोफाइल है, ये शेप है, दिस इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू, इट इज जस्ट ए प्रोफाइल फॉर द क्रिटिकल स्पीड। सिमिलरली फॉर द सेकेंड क्रिटिकल स्पीड में अगर हमने 394.076 डाला है रेडियन पर सेकेंड, तो करस्पॉन्डिंग आपका आरपीएम हो जाता है 3763 आरपीएम। तो ये सेकेंड क्रिटिकल स्पीड हो गया, और करस्पॉन्डिंग डेट आपका बेंडिंग मोमेंट 0 हो रहा है, क्योंकि अब थोड़ा चेंज करेंगे तो प्लस का माइनस हो जाता है, दैट मीन्स इट इज 0। इसका मोड शेप देखते हैं। तो इसका मोड शेप इस तरह से आ गया, दिस इज सेकंड क्रिटिकल स्पीड का मोड शेप। नाउ थर्ड क्रिटिकल स्पीड के लिए अगर हम 1216.645 डाल देते हैं, 1.16.645, तो करस्पॉन्डिंग आरपीएम आ जाता है 11,618, एंड दैट टाइम बेंडिंग मोमेंट आपका M20 जो है वो 0 हो रहा है। इसका मोड शेप ऐसा होगा थर्ड क्रिटिकल स्पीड का, इस तरह से। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हमने यूजिंग द जनरल मेथड्स हमने मल्टीपल क्रिटिकल स्पीड्स निकाल सकते हैं। वी हैव टू डिवाइड द यू नो shaft in different stations, assign their masses, and then do the calculation and calculate the critical speeds by changing the frequencies and obtaining the M20 value. Bending moment at the last station should be 0. So different critical speed is possible and that can be calculated. So thank you for watching.